Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE NEET on PracBee practice app. Download now. Now, what is conservation of energy? Conservation of mechanical energy. So basically क्या होता है कि लगने से कोई दिक्कत नहीं है. Suppose this is conservative, this is non-conservative, this is external. So if work done by F external and non-conservative is 0. ठीक है. यदि ये 0 होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, कह सकते हैं. किस थ्योरम से? बिकॉज़ बाकी दोनों 0 हो गए. व्हिच थ्योरम इज दिस? वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम इज दिस. ठीक है. सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव को मैं माइनस डेल्टा यू भी लिख सकता हूँ. गॉट इट? यस. सो डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू को मैं 0 भी लिख सकता हूँ. ओके. Sum of kinetic energy plus potential energy of a body is change in kinetic energy plus potential energy of a body is 0. Is it clear? इसे फॉर्म 1 कह देते हैं. इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0. तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल. तो इसे हम लिख सकते हैं एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल. दिस इज फॉर्म 2. ओके. ठीक है कुरशिश. And I can also write this relationship as कि kinetic energy final minus kinetic energy initial is initial energy minus final energy. So this is gain in kinetic energy. This is loss in potential energy. ये इसका वाइज वर्सा भी लिख सकते हैं. Loss in kinetic energy is equal to gain in potential energy. This is form 3. राइट. आपको कौन सा फॉर्म यूज करना है while solving question? It is dependent on you. मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये सॉल्व यूज करता हूँ. कभी कदार नीड पड़ता है तो ये, और रेयरली मैं ये यूज करता हूँ. फाइन. राइट. बट इट्स अबाउट कंफर्ट. इट्स नॉट अबाउट कि 3 अलग फॉर्मूलाज हैं.